You need to go. Yes. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना. So he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67 3 के तहत my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया. तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships. Chaudhary sir, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? कोई सवाल नहीं है. नो कमेंट. गाड़ी लगवाए छोड़ दे. बेटा या भतीजा है सब कुछ बंद. कसम हमारा है वो इस वक्त वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेस. भाई अब एक तो वो हम क्या करें उसका. हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ही होगा. मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें. मैं कुछ ना मैं देखता रहूं. तो एक तो योगा. देखिए देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौके दिया कॉस्मेटिक है कानून. जो बात आज आप कर रहे हैं आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं. देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना. आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा, तो नहीं कराएंगे. फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व. देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर. पता नहीं कैसे क्या सदर ने ऑन दी एडवाइस. मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं. फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं. भाई ये जमहूरियत है. यू विन समटाइम्स, यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड. यू कांट कीप शिफ्टिंग. भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं वो वजूद्दीन साहब भाई असूली आदमी थे जहां तक मुझे, हम सब मानते हैं उनको. वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया. मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकियों पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको ऐसे हमें बहुत फेवरेट वजूद्दीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था. लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा बड़ी अच्छी बात है कि the principles should stand the same whatever the situation. और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है. मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम द थिंग्स रिवर्स. एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. Bas, you should be scared of absolute power. Yeah, absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो के साथ चला जाए. I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं
ये तो अब मेरा मौका आ गया बट योर लॉर्डशिप चलिए खैर कोई अब तो आगे बढ़ते हैं जी so sir my ground so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections it is violation of article 73 और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी और इस जजमेंट में दिस इज नवाज शरीफ जजमेंट सो ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एज योर लॉर्डशिप राइटली सेड हैव बीन हर्ट and at some point in time come paying for article 17(3) और इस केस में भी सर अगेन बहुत एलेबरेट जजमेंट है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर एंड दैट वाज ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल राइट्स पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि शायद मेरे घर कुछ लोग गए हैं, बैरिस्टर गौहर अदालत से चले गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। मैं देख लेता हूँ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत से रवाना हो गए। क्या वाक़या पेश आया आपको सुनवाते हैं। कंप्यूटर भी उठा रही है, डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए, 4 डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना so he may have to right now. I will continue जी okay we're living in difficult times but let's go on so he may कंप्यूटर भी उठा रही है, डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए, 4 डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना so he may have to go right now. I will continue जी okay we're living in difficult times but let's go on so he may have कंप्यूटर भी उठा रही है। done irregularity in the election and number two that the interpretation if accepted of election commission would be that interpretation would squarely fall contrary to article 17 my third ground your lordship is that ECP is not a court of law and for that proposition I will refer to 2 judgments which is 2021 SCMR 1675 and the second case is Faisal Wada's case 2023 SCMR 370 now डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस। हाँ जी बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ। नहीं मैं only one point I'm quoting these cases only for one point that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body but is not a court of law under article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो पास देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। वो तो वो पावर सिर्फ डिस्प्यूट वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे। पावर दिए हैं वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप या किसी ने क्या चैलेंज किया है वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी हो गया बट वी आर अगेन रिवर्टिंग बैक। नो आई एम नॉट दिस इज सेकंड थर्ड पॉइंट सर। ये 200 दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। इट सेज व्हाट माय पॉइंट इज दिस। टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में है, उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। सर दैट इज फॉर नॉट गिविंग अ डॉक्यूमेंट का तो इशू या नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ। अगर नहीं है आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में सेक्शन को,
फिर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 है ही नहीं। चलिए जजमेंट पता है, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, is that ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी सही वाली A आदमी। court of law can be abolished. जी, by law। जी। Statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ। So my point is this कि the intra-party election is a civil आर्टिकल 219 कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं, such other functions as may be specified by an act of मजलिस शूरा पार्लियामेंट। जी, ये आपने पढ़ लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो। सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है। आई एग्री। तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है। ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो